For documentary filmmaking, I would say you have to have a good sense of your surroundings, to be aware of the little things and people around you, and be curious. I think curiosity is very important because often the ideas will be somewhere around you, some people around you. So just keeping a curious mind and adopting a different lens by looking at everyday things, from a different angle. That's very important. First decision is budget. Once you have a subject in your hand, uh, as in once you agree to let's go with this one subject, then the most important aspects of it is the money, the kind of money that you have for that kind of a subject. Do you really have that kind of a money to make that film? It's never gonna happen कि आपके पास budget नहीं और अपनी film बना ली. So looking at that budget, then you can start understanding where you can probably how you can work on that craft. So the budget is very important. सबसे पहली चीज कि हमको स्टोरीज जो होते हैं वो एक पावरफुल मैसेज देना चाहते हैं. जितने भी आप शॉर्ट फिल्म देखते हो, चाहे वो स्टूडेंट के हो या प्रोफेशनल में बनाए, तो शॉर्ट फिल्म में एक टाइम बहुत अपने पास कम होता है और उस कम टाइम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लाइक गोइंग टू द फ्यूचर, चाहे वो फिल्म फीचर फिल्म हो या ओटीटी फिल्म. तो मेन है फोकस ऑन स्टोरी. आपका जो स्टोरी टेलिंग है, नरेशंस है एंड स्क्रीन प्ले हैज टू बी टाइट एंड वेरी इम्पैक्ट.